Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is me Eliza Fatima and today I will be starting off with rule number 16. Previously we were doing rule number 16 but due to some internet connection problems that was discontinued. So let's start with rule number 16. ये जो मैंने words लिखे हुए हैं all these words like different categorize किया हुआ है इनको हम हमेशा we always use them as singular लेकिन इनके आगे एस आता है तो उनको इसको देख के ना स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो इनको हमेशा हमने एज सिंगुलर यूज करना है और बेशक वो चेस हो देन वी हैव दीज बुक टाइटल्स लाइक अरेबियन नाइट्स पैराबल्स ऑफ शेख सादी तो सबके एंड में दे हैव दिस एस at the end और इस s की वजह से आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना you don't have to mix them with other plural words rather ये itself singular है लेकिन इनके end में they have this s so don't confuse yourself ये next एक past paper question है हमारा past paper question है Gulliver Travels के end में s है ठीक है अब यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर कंफ्यूज्ड कि इसको हम लोग वर्स करें या वर करें तो आपने इसको वर्स करना है बिकॉज हम लोगों का ये एक मूवी टाइटल है और इसको हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे किसी मूवी टाइटल गेम्स के एंड में एस आ जाए तो वी यूज दैट वर्ड एज अ सिंगुलर वर्ड ठीक है तो वाज रिटन बाय जोना यहाँ पे पास्ट पेपर क्वेश्चन था उसके बाद फिर एक और कैटेगरी है हमारी कंट्रीज की कैटेगरी कंट्रीज में हमारे पास आ जाते हैं मालदीव्स द यूनाइटेड स्टेट्स नीदरलैंड्स यहाँ पर ये सब एस पे एंड करते हैं तो इनको आपने हमेशा प्लूरल ही सपोज करना है डू नॉट सपोज सिंगुलर सपोज करना है सो सॉरी प्लूरल नहीं कभी भी यूज करना है इनको देन वी हैव दिस टिडबिट हमारी टिडबिट इस दफा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमेशा हम लोग ही यूज करते हैं तो अगर यूनाइटेड स्टेट के साथ शी यूज हुआ तो आपने वो उसको चेंज करना है एंड दैट्स करेक्शन मिस्टेक और आपने उसको ही कन्वर्ट करना है ये दिस इज अ कन्वेंशन अब इसके पीछे वी डोंट हैव एनी लॉजिक लेकिन दुनिया की सारी कंट्री नेम्स के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपने साथ ही यूज करता है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ वी ऑलवेज यूज शी फिर जनरल लिस्ट में भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जैसे इनिंग्स सर्विसेज टाइडिंग्स मैथमेटिक्स फिजिक्स लिंग्विस्टिक्स देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स ये सारे जो हैं इनके एंड में एस तो यूज होता है बट वी यूज देम एज सिंगुलर वर्ड्स नेक्स्ट अप वी विल स्टार्ट विद रूल नंबर 17 सो ये है wages salary and reward इसके अंदर होता है प्लूरल एंड इसमें होता है सिंगुलर ठीक है वेजेस के सेम स्पेलिंग में दो मीनिंग्स होते हैं एक तो सैलरी हो जाता है एक रिवॉर्ड हो जाता है और इसको ना यूजुअली मिस्टेक कर लेते हैं जब वो सैलरी एज सैलरी यूज हो रहा होता है तो वी यूज अ प्लूरल वर्ब विद दैट वेजेस और अगर वो एज रिवॉर्ड यूज हो रहा हो तो वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद दिस वेजेस ठीक है अब इसकी एग्जांपल सीखते हैं फिर लेट्स सी whether you will be able to solve these examples or not the wages of sin is hell the wages of good deeds is paradise the wages are distributed among the workers s we have this s over here so what do you think which sentences are correct first and third let's check यहाँ पर wages is used as salary तो ठीक है salary के बाद हमने कहा कि it's always follows a plural verb तो ये ठीक हो गया वेरी गुड देन हमने यहाँ पर बात की कि रिवॉर्ड के तौर पे जब आएगा तो इट ऑलवेज फॉलोज अ
सिंगुलर वर्ब, ये भी ठीक हो गया. सो व्हाट डू यू थिंक सेकंड सेंटेंस में क्या गलती है? सेकंड में आर आना चाहिए था. Yes, exactly. Next up we have rule number 18. Sorry. So our rule number 18 is difference between noun and verb. Difference between noun and verb. Let's draw a line in between noun and verb. So हमारे पास ऐसे words होते हैं that both act as a noun and as a verb, लेकिन when they act as a noun their spellings are different, and when they act as a verb their spellings are different. So let's see those words. What are those words? Breathe, it's breath and breathe. इसका मतलब है कि I can इसकी examples लिखते हैं, then I'll explain you. I can hear his breath. I cannot breathe properly. तो यहाँ पर this breathe is used for a person himself, और वो कह रहा है कि I cannot breathe properly. और इसके अंदर this breathe is acting as a verb, so हम लोग इसकी ये वाली spelling लिखेंगे with this e at the end. और breath ये है कि if a person is lying on floor और उसकी सांस नहीं आ रही, तो दूसरा person is saying कि I cannot hear him breathe, his breath, sorry. तो यहाँ पर ये जो है एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, तो इसकी स्पेलिंग ये वाली होती है. ठीक है, इन स्पेलिंग्स का भी बड़ा ख्याल रखना होता है बिकॉज वी यूजुअली गेट स्पेलिंग मिस्टेक्स आल्सो. Next up we have envelope, and it's envelope and envelope. ये जो है it's cover, and this is लिफाफा, या आप कह दें कि a package, a small packet, जो हम उर्दू में इसको लिफाफा कहते हैं. I have put 1,000 rupees. I have put 1,000 rupees in the envelope. इसको थोड़ा सा pronunciation भी ना थोड़ा सा different होता है, लेकिन लोग एक सही बोल देते हैं. और and the night has enveloped the sky bus and covered it with a black and covered it with a black blanket. Next up, we have this word. That is mayor. And this is mayor. This word is mayors, S at the end. And this word is mayor. तो इसके अंदर steps कहते हैं कि following mayors were taken by the team to solve the question, to solve the problem. और this mayor means to weigh, नापना. Then इसके अंदर we have this example, the police have used the curtain as security measure.
इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर भी हम यही वाला एस वाला मेजर्स यूज करते हैं. एंड द मेयर, sorry, they measured the carpet. Next up, we have this word. We have this word remains. Remains. And remain. Remains means leftover. Remain means, इसको कर लेते हैं. Remain मतलब involved. Involved में ई आता है या आई आता है? Sorry. ठीक है. हाँ, involved. सही है. This remains of the food will be eaten by the dogs. Will be eaten by the dogs. They remain busy at night. Next up we have advice. हमने इसकी मतलब बहुत क्रिटिकली अपने पैराग्राफ को देखना है, बिकॉज ये जो मिस्टेक है ना, ये सिर्फ मतलब टॉपर्स को ही मिलती है, क्योंकि इस तरह कोई बताता नहीं है. और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे टीचर ने मुझे बताया और मैं सबको बता रही हूँ. तो आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ और ब्रैगिंग अबाउट माई टीचर, लेकिन ये चीजें आपने बहुत क्रिटिकली देखनी है अपने पैराग्राफ में. एडवाइस एंड एडवाइस. अब देखिए यहाँ पर सिर्फ दिस डिफरेंस ऑफ सी एंड एस, और दोनों का मतलब फंक्शन डिफरेंट हो जाता है. व्हेन इट एक्ट्स एज अ नाउन तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सी, एंड व्हेन दिस एक्ट्स लाइक एन adverb, sorry, not an adverb, it's when it acts like a verb, so it has this s in between. She gave me 2 pieces of advice. She advised me. Next up we have effect. इसका तो सबको ही पता था. An effect. The effect. Sorry, जी. एक बात पूछ रही थी, एडवाइस और सी और एस वाले में मीनिंग तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होता. दे आर द सेम मीनिंग, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है. ओके. The effect of the drug addiction are horrible. I am affected by drug. So यहाँ पर इसका फंक्शन चेंज हो गया है कि यहाँ पर इफेक्ट एंड इफेक्ट, इनके दोनों की मीनिंग्स अलग होते हैं. जो बंदा यहाँ पर ड्रग्स ले रहा है वो उस ड्रग्स के अंदर मतलब he is affected by the drugs, और ये कह रहा है कि अगर if you take drugs you'll be affected by the consequences of the taking in drugs. ठीक है. Next up we have example number I guess 6 or 7. So practice आ गया हमारा. Practice and practice. You need to practice to perform well. इसमें भी मीनिंग नहीं चेंज होता.
You need to practice to perform well. Barber is practicing well. Either this word is acting as a verb. So हम लोगों ने यहाँ पर sorry गलत जगह मैंने s लगा दिया. यहाँ पर आना चाहिए s. तो यहाँ पर this word is acting as a verb. So इसकी spelling with this s in between. और यहाँ पर we have this word acting as a noun. So iski spelling has this C in between. And that's the end of rule number, I guess, 18. Yes, this was rule number 18. Next up, we have rule number 19. Rule number 19 says that some nouns, the same for form whether singular or plural, have the same form whether they're singular or plural. Some nouns have the same form whether they are singular or plural. Okay, जैसे equipment, इसका हम equipments नहीं करते कभी भी, इसका singular भी यही होता है और plural भी यही होता है. Then we have news, इसका भी singular यही होता है, plural यही होता है. Chinese, कुछ लोग समझते हैं क्योंकि we also speak उर्दू ना, तो लोग समझते हैं कि ये Chinese, this word is plural, और वो कहते हैं I have met this Chinese. वो एस ई ना हटा देते हैं एंड दे फील लाइक कि अब मैंने सही बोला है, हमने एक बंदा देखा है ना, तो वी रिमूव द एस एंड ई अलोंग. सो दैट्स विद दैट said, they think that they have made a singular word. Lekin Chinese, whether we use this word as a singular word or plural word, this word remains the same. Next we have information. हम कभी भी information नहीं कहते, informations नहीं कहते, we always use information. Then we have French, luggage, excrement, that is कूड़ा करकट को excrement कहते हैं, garbage. And that's all for our topic noun. और हमारा last rule complete हो गया. And if you have any question, you can ask for me, or else this video will be ended by me. Any questions? No, Lisa. Acha. So that brings us to the end of this video. I hope that you have liked this video and you have subscribed to my channel. So thank you very much for having me, and please do subscribe this channel because this motivates me a lot. Or stay calm, practice hard, love grammar. Allah Hafiz. This is Aliza signing off. Allah Hafiz. Peace out.